So well, let's start with a monocot now, right? So we're going to check out this simulation with monocot seeds. पहले हम लोग कॉर्न सीड से शुरू करेंगे और कॉर्न सीड को जो है हम लोग बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इसको डाइसेक्ट करके और उसके इन की पार्ट्स को हम पहचानेंगे. ओके, so okay, first let me reset it. Monocot seed here. So first we are starting with corn seed. So I took my bicep here. Yeah, forceps here. Let me put the needle first in the forceps. Now let me check out where is the endosperm. Okay, radical endosperm. We will have to check out which part could be called endosperm. Let's see if it is. No. If this is endosperm, no. Is this endosperm? No. Okay, so this is the endosperm. Fine. Now we have got scutellum. Okay, that's very difficult to pronounce for me. तो ये कौन सा पार्ट है? स्क्यूटुलम है क्या ये? No. Okay, so this is the scutellum part. What is scutellum? Okay, no. Now we are going to have plumule, and now we are going to have the radical. So first let's talk about radical. The radical basically develops into the root, and radical is located here, and plumule is located here in the corn seed, right? And this right here is the scutellum, right? Yes. So let's check. Let's try with another monocot seed here. Wheat. So let me use the forceps here to separate the or remove the seed coat. Now we have got the wheat seed here. चलिए नीडल का यूज करते हैं, फोरशेप का यूज करते हैं, सीड को ब्रेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं. So this is the endosperm. So unlike dicot जहाँ पर कि cotyledons होते थे, here we have endosperm which will provide nutrition to the plant or embryo, right? Then we have got scutellum, scutellum, right? So it is part of plumule, it seems. We don't have hypocotyle here. Radical. Radical will basically develop into the root. Let's reset it and try it with another seed now, monocot seed. We are trying it with rice this time. So first we remove the seed coat. Then we will use the needle now. Sorry, let me get the needle. And we use the forceps here. Check it under the microscope. So this is the rice seed, remember? So this, right? जहाँ पर हमारा जो है कोटिलेडन हुआ करता था, तो उस जगह पर यहाँ पर क्या है मौजूद? यहाँ पर एंडोस्पर्म मौजूद है वहाँ पर, राइट? Scutellum, right? Then we have got the plumule. Sorry, this is the location of the plumule, and this is going to be the location of the radical, right? चलिए अब फिर से रिसर्च करते हैं और दूसरे फाइनल मोनोकॉट को देखते हैं हम लोग. ओट्स.
Again, use the forceps, remove the seed coat. Now take the needle and the forceps, separate it. Now look at it under the microscope. So this is a close-up view of an oat seed here. ये oat seed का close-up view हो गया. तो इंडोस्पर्म कहाँ आना है पता चल ही चुका है हम लोगों को, राइट. स्केचुलम किधर आना है तो ये भी पता चल चुका है हम लोगों को. इसका स्केचुलम यहाँ लोकेटेड है. प्लूमल जो है वो किधर लोकेटेड रहना चाहिए. ओके, ओट के केस में प्लूमल यहाँ लोकेटेड होगा और रेडिकल जो है वो यहाँ लोकेटेड होगा. ऑलराइट. So well, this way we have checked out these monocot seeds और हमने देखा है कि मोनोकॉट्स का जो एम्ब्रियो का होता है स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है. मोनोकॉट सीड्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डाइकॉट से जो है बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट. और उसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट हमें देखने को मिलता है. सो वेल, दैट वाज अबाउट द मोनोकॉट्स. थैंक यू.